हेलो डियर फ्रेंड्स, संडे एकेडमी रे आपनको बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा रेलवे एग्जाम्स रो आरपीएफएसआई एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन कांस्टेबल और स्टैटिक जीके की मास्ट जीके स्पेशल रे इंडियन पॉलिटी पार्ट 11 चलो तो स्टार्ट करिबा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कोची आर्टिकल 20 to 22 related to the fundamental right to life and personal liberty. These rights are available to natural person as well as artificial person, all person who have a juristic personality, citizens only, citizen and non-citizen, and so on. D, citizen and non-citizen. Question number 2, right to freedom of religion cannot be restricted on the ground of health, morality, public order, security of the state. Answer is security of the state. Question number 3 question, according to the article 35 with respect to any of the matters under the article 16 the 3 32 the 3 33 and 34, who has the power to make laws? Both and B, the state legislature, the parliament, none of the above. So ଆପଣଙ୍କର D, none of the above. Okay. अच्छा, आंसर अब पिलाମାନେ C ହେବ, sorry C ହେବ आंसर ଆପଣଙ୍କର। The parliament has the power to make laws. भूल ହେଇଯାଇଛି। ओके, ठीक ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। Question number 4, how many duties are conferred on the citizens in the article 51A? 11, 12, 8 or 9? Answer ଆପଣଙ୍କର 11. Okay. Question number 5, which article of the constitution provides that the parliament will determine the extent of the fundamental rights for the member of the armed force? Article 33, 32A, 31D, none of the above. Answer ଆପଣଙ୍କର A, article 33. Okay. Question number 6, the farmer of the constitution borrowed the concept of directive principle from Government of India Act 1935, Constitution of USA, Constitution of Switzerland, Constitution of Ireland. Answer ଆପଣଙ୍କର D. Okay, the farmers of the constitution borrowed a concept of directive principle from the Constitution of Ireland. Okay. Question number 7, the disputes regarding the election president and the vice president of the India are laid and settled both in the Supreme Court as well as High Court, in the Election Commission, in the Supreme Court, in the Parliament. Answer ଆପଣଙ୍କର C, in the Supreme Court. Okay. Question number 8, the president's rule under the article 356 remained valid in the state for the maximum period of 1 year, 2 years, 6 months, 9 months. Answer ଆପଣଙ୍କର C, 6 months. Question number 9, on receipt of a constitutional amendment bill passed by both houses of parliament, the president may give his assent, may withhold his assent, may return the bill for the reconsideration, shall give his assent. Answer ଆପଣଙ୍କର D, shall give his assent. Okay. Question number 10, the East India Company was established by the British Crown in the year 1600 AD, 1605 AD, 1726 AD, 1757 AD. Answer ଆପଣଙ୍କର A, 1600 AD. ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକାଡେମୀର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକାଡେମୀ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ QR କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, OS टेस्ट एंड डिस्कशन बैच आम पाखे अच्छी जोटा ना हो स्मार्ट बैच। आपने निश्चित भाव में 699 प्राइस अच्छी यार, निश्चित भाव आडमिशन करेंगे कौन अच्छी सेमती जब आपने एएसओ फाउंडेशन बैच चाहते आशा ओपीएससी बैच आम पाखे गोटे अवेलेबल अच्छी आडमिशन इनक्वारी करेंगे। एएसओ मॉक टेस्ट एंड डिस्कशन बैच जाना लाखुसी आपंकर प्राइस हो 399 आडमिशन इनक्वारी करेंगे। सेमती ओडिशा फाउंडेशन बैच जब आपर ओपीएससी ओएसएससी ओटीपीएसएससी एसएससी रेलवेज प्रिपरेशन कर गोटे बैच नियंतु ओडिशा फाउंडेशन में बेस्ट बैच। आ प्राइस हो मात्र 999 आता सहित लाइब्रेरी आम पाखे अवेलेबल अच्छी प्राइस हो 499 पे जी। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेवेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ repugnancy between central law and the state law is found in Article 156, Article 254, Article 300,
NT 42 list 3 आंसर आपनकर बी आर्टिकल 254 ओके चलते क्वेश्चन नंबर 12 the central government can issue direction to the state regard to देखन दे देखंतु 1 दे यूनियन 2 यूनियन लिस्ट 2 दे स्टेट लिस्ट 3 दे कॉर्पोरेट लिस्ट ता लिस्ट कोटा किन देबा कथा आपण आंसर किन देबो ना एठी आपण आंसर डी हेबो 1 2 3 हेबो ओके प्रथम यूनियन तापर स्टेट तापर कॉर्पोरेट लिस्ट ओके आंसर को कहली तापर असला क्वेश्चन नंबर 13 what cannot be done directly cannot be done indirectly the doctrine related to impile powers and CRD powers pitch and substance and colorable legislation कोन आंसर आपनकर डी हेबो colorable legislation ओके what cannot be done directly cannot be done indirectly okay सेटा होची colorable legislation question number 14 when the supreme court said that determine any questions involving a substantial questions of law act to the interpretation of the constitution or the rendering is advised the minimum number of judges constitution the bench should be 5 3 7 or 13 सब आपनकर 5 पांचटा जज बसिबे question number 15 petitions to supreme court under the article 32 are subject to the rules of कोन respect statutory provision quo warranto above corpus अपना आंसर होबो डी above corpus question number 16 the directive principle of the state policy are the conscience of the constitution which embody to the special philosophy of the constitution was opened by Granville Austin K.L. Warner Dr. B.R. Ambedkar A.V. Dixie कोन आंसर आपनकर ए हबो Granville Austin okay question number 17 which of the following judgment is not related to the doctrine of separation of the powers union of India versus Shankal Chand Asif Hamid versus state of Jammu Kashmir state of Rajasthan versus Union of India Goloknath versus state of Punjab आपण भी तो गोटे आंसर जाने थिबे सेटा होची डी Goloknath versus state of Punjab okay question number 18 any charge of the impeachment of the president may be preferred only in the joint system parliament by either house of the parliament only in the council of the state or only in the house of the people answer आपन B का any charge of the impeachment of the president may be preferred by the either of the house of the parliament okay question number 19 any change of the impeachment of the president may be preferred सेम क्वेश्चन आता पड़ेगा आकाश सेम क्वेश्चन आंसर सेटा हम पिला माने ठीक बोली जाई बी के आंसर ओके ठीक है लास्ट क्वेश्चन देबा द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इज an independent power distinct from the judicial power it is the not justiciable on its merits only the area of the scope of the president's power under the article 72 can be examined by the court this was heard by the supreme court in Moruram versus Union of Government State of Punjab versus Joginder Singh Keher Singh versus Union of Government all of the above answer आपन D all of the above सब जक डेटा थिला ओके ओके पिला माने ये होचे सन्ने एकेडमी रेटी गोटे जो क्यूआर कोड देचे निश्चित भाबरे आपन स्कैन कोन तो भीतर पसले जानि पारबे कोन सरप्राइजेस रहिछ तापर पिला माने क्विज मॉक टेस्ट एंड डिस्कशन बैच रहिछ जार प्राइस होचे 699 बैच नाउ जे स्मार्ट ता विषय इनकर करिवे आपन नंबर दियाछ पिला माने तापर आपन जदी फाउंडेशन बैच होचंती ओपीएससी एसो पई बैच नाला आशा आपन माने इंक्वायरी करि परिबे ऐसा विषय रे ओके तापर पिला माने एसो जदी आपन प्रॉम्प्ट हे करनी निश्चित भाबरे मॉक टेस्ट दियंतु मॉक टेस्ट पई आपन बकरा अछि कोन मॉक टेस्ट हम बकरा अछि खुशी बैच जोटा कि एस मॉक टेस्ट एंड डिस्कशन बैच प्राइस मात्र 399 अनुसार इनकर करंतु आ ओडिसा फाउंडेशन बैच गोटे रहिछि आपनकर ओडिसा रो जे कोनसी एग्जाम सहित आपनकर एसएससी रेलवे आ तार प्राइस भी जन मध्य 999 हला आ जदी आपन लाइब्रेरी जॉइन करे पई जाउछन्ती प्राइस होछि 499 सिस्टम जॉइन करिवे आपन माने एक्सपेरियंस हमको कहिबे पिला माने क्वेश्चन नंबर 10 रहिला
power of the allocation of the state in the house of the people to the state and the constitution is vested with says legislature president election commission parliament निश्चित भाव आंसर कमेंट सेक्शन में जनातु जो मैंने जनइबे निश्चित भाव आंसर ठीक ले गोटे हार्ट और स्माइली मिल से जानवे जो एग्जाम एथर रेलवे निश्चिंत भल करी जेकोसी रेलवे एग्जाम आसी जाओ है गोटे कन्फिडेंस आसो जब न करेंगे आम जानवे आपने इंटरेस्ट नहीं खाली वीडियो देखते बट निश्चित कमेंट करूँ थोड़ा कमेंट करूँ निश्चित भाव जानीपर आउ वीडियो टी लाइक शेयर सब्सक्राइब टी निश्चित करूँ किसी जब डाउट अच्छी निश्चित कमेंट करूँ आम जानिक विषय खुशी हूँ ओके किसी डाउट आसने क्वेश्चन बुझी पाना आम गोटे सेपरेट रिल्स भी बनई देवु जे क्वेश्चन पे बुझी पाना डिटेल बुझेदेव ओके पे थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आज क्लास रखुच्छी थैंक यू सो मच।